Today I am going to submit an episode of one word substitution which has been frequently asked in the exams. First one is a solution for all difficulties or diseases. A solution for all difficulties and diseases. This is called panacea. P-A-N-A-C-E-A. panacea. रामबाण इलाज, ये एक नाउन है. समथिंग नो लॉन्गर इन यूज. समथिंग नो लॉन्गर इन यूज. दिस इज कॉल्ड obsolete. O-B-S-O-L-E-T-E. obsolete. दिस इज एन एडजेक्टिव. हिंदी में ऐसे अप्रचलित कहा जाता है. ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट. A place where birds are kept. This is called aviary. A-V-I-A-R-Y. aviary. This is a noun. हिंदी में इसे पक्षीशाल कहा जाता है. An inscription on a tombstone in the memory of a person who has died. This is called epitaph. Epitaph. E-P-I-T-A-P-H. epitaph. This is a noun. हिंदी में इसे समाधि लेख कहा जाता है. One who cannot be corrected, one who is beyond reform. This is called incorrigible. I-N-C-O-R-R-I-G-I-B-L-E. incorrigible. This is an एडजेक्टिव. हिंदी में इसे अनसंशोधनीय कहा जाता है. समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड. समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड. दिस इज कॉल्ड इनएविटेबल. इनएविटेबल. दिस इज एन एडजेक्टिव. हिंदी में इसे अटल कहा जाता है. एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस. एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग in a small confined place. This is called claustrophobia. Claustrophobia. C-L-A-U-S-T-R-O-P-H-O-B-I-A. claustrophobia. छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर. This is a noun. Handwriting which is difficult or impossible to read. Handwriting which is difficult and impossible to read. This is called illegible. I-L-L-E-G-I-B-L-E. illegible. This is an adjective. हिंदी में से अपठनीय कहा जाता है. A person who can endure pain or hardship. A person who can endure pain or hardship without showing his feelings complaining. This is called stoic. Stoic. S-T-O-I-C. stoic. This is a noun. हिंदी में इसे सहनशील व्यक्ति कहा जाता है. An imagined society where everything is perfect and everyone is happy. A place of ideal perfection, especially in laws, government and social conditions. This is called utopia. U-T-O-P-I-A. utopia. हिंदी में इसका अर्थ होता है आदर्श राज्य, और ये एक नाउन है. ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग. ए पार्टनर इन क्राइम. दिस इज कॉल्ड एकम्प्लिस. A-C-O-M-P-L-I-C. एकम्प्लिस. दिस इज ए नाउन. हिंदी में इसे सह अपराधी कहा जाता है. समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस intended to increase human well-being. This is called altruist. A-L-T-R-U-I-S-T. altruist. This is a noun. हिंदी में इसे परोपकारी कहा जाता है. This is all about today's most repeated one-word substitution which has been already asked in the examination. Thanks. Regards.